कुछ लोगों को लाइफ में सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है और बाकी अपॉर्चुनिटीज वो अपने लिए खुद बना लेते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही गेस्ट से बात करने वाले हैं जो कि ना किसी आईआईटी से हैं, ना किसी एनआईटी से हैं, या आपने उस कॉलेज का नाम शायद ही कभी सुना होगा, बट फिर भी उन्होंने एक साल के अंदर अंदर अपनी ड्रीम जॉब ली, वो भी अपनी ड्रीम लोकेशन पर। ही बिलीव्ड इन हिज स्किल्स एंड ही डिड नॉट लेट हिज कॉलेज टैग कम बिटवीन हिम एंड हिज ड्रीम्स। और मैं ज्यादा बोल के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं उनको ही ज्यादा बोलने दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बस एक चीज मैं बोलना भूल गया कि इस वीडियो में गिव अवे भी है, सो वॉच आउट for it. So hi Shlok, welcome to the Code School. So first of all, can you introduce yourself to the audience? Hey Dianshu, thank you for having me. So my name is Shlok Soni. I graduated in 2021 from Marwadi University. Post that, I did my internship in a company called Big Binary, which was working on Ruby on Rails. Post that, I joined Amazon as software development engineer one. Worked there for about a year, and then I applied to a few other companies outside India because I always wanted to work outside India. So I applied to Microsoft and Google, and I got offers from both of them. And finally, I moved to Google Poland. I got offer from Microsoft Dublin, and also got one rejection from Facebook London. That's great. So श्लोक, बाहर की कंपनीज में आउटसाइड इंडिया अप्लाई करना काफी टफ होता है कि इवन फॉर पीपल फ्रॉम आईआईटीज और एनी अदर गुड कॉलेज, उनके लिए भी काफी टफ होता है. सो हाउ डिड यू अप्लाई एंड कैन यू टेल अस अबाउट दैट? Yeah, sure. So, I think this was about 4 or 5 months ago when I started applying to all these jobs, and तब मैंने देखा कि LinkedIn पे there were like messages, like post flooding with offers from outside India, and I thought, like, I think there is an opportunity कि बाहर भी तुम्हें मिल सकता है. So I just applied on the portal itself. For Google, I took a referral from one of my friends, LinkedIn connection. I just cold messaged her, could you please give me a referral, and she was happy to do that. And I mean, difficult. I think it's difficulty is one and the same because it's just that the interviewers are from other country. But I think difficulty wise, it's same as applying to India. So yeah. या तो श्लोक, काफी लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, काफी लोग जो आईआईटी से नहीं है, एनआईटी से नहीं है, कि उनको काफी कंपनीज रिजेक्ट कर देती हैं, शायद कॉलेज देख के ही रिजेक्ट कर देती हैं. सो आपके साथ भी कॉलेज में ऐसा कभी हुआ क्या, एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट, और कैसे आपने वहां से फिर अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये सब कंपनीज क्रैक की? सो कभी ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके साथ हुई? I mean, directly तो मुझे किसी कंपनी ने बोला नहीं है कि you are not from IIT or NIT, so we can't take you. But I think certainly ऐसा मेरे साथ हुआ होगा because the reason for this is crack Amazon सबसे difficult था. Like that was like to even get the interview call, it was very difficult for me. I waited for almost about a year and a half. I was continuously applying, but I didn't get any call. But then I realized कि after cracking Amazon, getting calls from Google and Microsoft was much more easier. They came in within a month or so of applying. So I think कहीं ना कहीं वो शायद प्रॉब्लम आई होगी, but like it's not impossible कि तुम्हें कॉल नहीं आएगा because everyone is hiring and looking for good talent in the end, right? I mean, NIT, IITs का tax, I think you can get a good edge over it to get the calls, but eventually I think after a lot of rejection, at least I got a call from Amazon, being from not the best college of India. Yeah, so I think if you keep working on your skills and you keep developing them, so कोई भी अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उसको ग्रैब कर सकते हो. लाइक आपके पास अमेजोन की आई, तो एक बार आप अमेजोन में चले गए, देन उसके बाद आपका कॉलेज वो सब मैटर ही नहीं करता. उसके बाद Exactly. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक सब लाइक तुम्हें इंटरव्यू के लिए तो एटलीस्ट इनवाइट कर ही लेंगे. Exactly. So Shlok, can you tell us which resources did you follow for your preparation for Google, Microsoft, and Amazon? I mean, my process was very chaotic. My approach was very chaotic. So I couldn't stick to one platform or one particular resource. I have like tried doing it all. मैंने CP किया है to the best level possible. Failed at it. मैंने लीड कोड बहुत अच्छे से ग्राइंड किया है. मैंने GFG थोड़ा कम यूज किया, मुझे पता नहीं वो इतना इंट्यूटिव नहीं लगा, बट आई यूज्ड GFG also for those articles. Interview bit when I grind किया, but in the end I think the best approach was like I used to take interview bit का जो भी पूरा flow है, first you do arrays, then strings, and then this and that, वो I used to follow. I think that was very helpful, but I also at one point मुझे ऐसा लगा कि I was doing arrays a lot and not moving forward.
So फिर उसके बाद I used to do couple of array questions, then move to the next section, then move to the next section. So like it was a mix of all, and in the end I don't know which particular resource I should be most grateful for, because everything has helped me. तो श्लोक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने बहुत सारी इंडियन कंपनीज के लिए भी इंटरव्यू दिया है। बाय इंडियन आई मीन जिनका ऑफिस इंडिया में है। सो Right. एंड बहुत सारी बाहर की कंपनीज के लिए भी दिया है। सो उनके इंटरव्यू प्रोसेस में कुछ आपको कभी डिफरेंस लगा कि अगर हम इंडियन कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बाहर के लिए, तो कुछ डिफरेंस लगा क्या ऐसा? So देवांशु, generally I think जो like big MNCs जो होती है उनका interview process all over the world same ही होता है. The only difference I would say is, so I was applying outside India, right? And the interviewers were from around the world. So I got one from, I think, Istanbul, and the only difficulty was it was very difficult to understand other people's like English accents. So that was the only difficulty I would say. Otherwise, I think the difficulty of the question and the interview process, all of them remains the same, not much different over there. Yeah, interesting. And how was your interview experience at Google and Microsoft? कितने कितने राउंड्स हुए, क्या टॉपिक्स उन्होंने पूछे? So can you share that? Yeah, sure. So for Microsoft, I think there were 3 rounds after the coding round, and one of them was high-level design, the other one was low-level design, and the third one was DSA. मुझे पता ही नहीं था कि उसमें like for this level, I think high-level design or low-level design पूछता है. For Google, I think it was very straightforward. It was there were, I think, 5 rounds. Yeah, 5 rounds, out of which 4 were purely DSA. So by if by any chance मैं थोड़ा एक question जल्दी कर देता हूँ, then they would make sure that 45 minutes I'm just thinking on a coding question, so they would give me another one. Also, one thing about Google interview is like they initially give you a very simple question, and you think that let's waste interviewers time and fill up the 45 minutes solving this easy question. But interviews के दिमाग में बहुत सारे follow up questions होते हैं उसके लिए, हम्म। जो मुझे बाद में पता चला, and those follow up questions are very very interesting. Like they add too much complexity in a very short period of time to that particular question. So that's that. और एक I think googliness round होता है जो तुम्हारे just check करने के लिए कि if you fit, if you're culturally fit in the Google environment or not. So yeah, that's that. या सो जो ये आपने पॉइंट बोला कि स्टार्ट करते हैं एक बहुत इजी क्वेश्चन से, हमें लगता है कि अरे बस यही पूछे, हमारा तो हो ही जाएगा, ये राउंड तो हो ही गया। धीरे धीरे वो बढ़ाते रहते हैं। लाइक मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं कोई इंटरव्यू दे रहा था, तो मुझे इंटरव्यूअर ने पूछा दो सॉलिड एरेज हैं, उसको मर्ज करना है। मैंने सोचा अरे ये तो क्या, 2 पॉइंटर्स रखूंगा हो जाएगा। फिर मैंने कर दिया ऐसे 5 मिनट में। फिर बोलते हैं अच्छा अब 3 एरेज हैं, अभी 4 हैं, 5 हैं, ऐसे ऐसे करते वो n नंबर ऑफ एरेज उस पर पहुंच गया, वो जो हीप वाला सोल्यूशन होता हम्म, है। तो वो धीरे धीरे बढ़ाते हाँ, रहते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा मुझे एक इंटरव्यूअर ने बताया था कि वो स्टार्ट करते हैं तुम्हारा लेवल जज करने के लिए, कि अगर इसको ये भी हाँ, नहीं आता, 2 एरेज को ही मर्ज करना नहीं आता, तो इसको n एरेज हम्म, मर्ज करवा के क्या ही करवाएंगे इससे, तो वो तुम्हें वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। तो वो धीरे धीरे ऐसे हाँ, स्टार्ट करते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। yeah. एंड ये जो आपने डिजाइन राउंड्स के बारे में आपको आइडिया नहीं था, तो फिर ये आपने कैसे किया उस टाइम पे? कुछ आपने प्रिपरेशन तो So नहीं किया था ना उसका, डिजाइन राउंड्स का, उससे पहले? नहीं नहीं, मैंने कोई स्टडी नहीं किया था उसके लिए, बट मुझे इन जनरल ऐसे डिजाइन पसंद था। लाइक इट वाज फैसिनेटिंग टू मी, क्योंकि मैं SD1 होते तुम कभी प्रैक्टिस नहीं करते डिजाइन की, बट आई वाज जस्ट आई यूज्ड टू लुक एट द यूट्यूब वीडियोस व्हिच वर वेरी स्टैंडर्ड की डिजाइन messaging app or design Uber or something like that. So I just tried to copy paste all the things that I had heard about. Like I didn't even know how to implement those things. I just knew the concept. I also told the interviewer that I'm not pretty much ready about this, but let's give it a shot. और मुझे जो जो पता था मैंने उनको बताया, and fortunately things turned out good for that. So yeah. Yeah, very nice. And Shlok, do you want to give any advice to our viewers who are not from very good college and who want to crack big companies like you? Advice, like one thing is for sure that everyone is going to do very good for themselves, no matter which college or what tier of college you are from. So one incident from my own life is that I gave this TCS code Vita, and that was a dream job for me at one stage of my life. Or
और मेरा रैंक भी आया था अराउंड 300 के आसपास, एंड लाइक आई वाज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट दैट हाँ अब तो मिल सकता है, 300 राउंड कोड बेटा मिल जाना चाहिए, एंड दैट आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम TCS. Or then I like the number of companies that I got rejected from, which were very small, was like they were in 3-digit numbers. I think I could have reached 3-digit numbers for rejection only. But then Amazon happened, and in 1 second everything turned around. All the rejections were didn't matter at all. So I mean, the only thing I would like to say is keep going. One day or the other, you are going to make it. So Yeah, that's very motivating. Yeah, so I hope if viewers have any questions, they can connect with you on LinkedIn. So I'll post your profile link in the description. So viewers, you can check it out. And thanks again, Shlok, for being a part of this. It was really nice talking to you. thanks, Devanshu. Likewise. So अब बात करते हैं गिव अवे की. So इस वीडियो में आई एम गिविंग अवे दिस गूगल SG टेस्ट सीरीज के कूपन्स टू 10 लकी विनर्स. इस कोर्स में आपको बहुत सारे DSA और डिजाइन प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने को मिलेंगे विच कैन हेल्प यू क्रैक गूगल इंटरव्यू. बहुत सारे मॉक टेस्ट भी हैं और प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट भी हैं जिसमें आप पार्ट ले सकते हो, एंड बहुत सारी कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं. सो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बहुत सिंपल स्टेप्स करने हैं. आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, एंड कॉमेंट्स में मुझे बताओ कि आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी है, आप किस कंपनी में जाना चाहते हो. ये सब चीजों का स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे मेरे इंस्टा पे DM कर दो, एंड आई विल चूज 10 लकी विनर्स जिनको एक कोर्स फ्री में मिलेगा. एंड द प्राइस ऑफ दिस कोर्स इज 799. सो मेक श्योर यू पार्टिसिपेट इन दिस. एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट. आई होप आपको श्लोक की बातों से काफी मोटिवेशन मिली. आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो. लिंक्डइन का उनका प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून.